अच्छा, सक्शन कर लिया तो डायरेक्टली सक्शन करते ही आपको लगता है टॉक्सिक बाइट निकल जाएगा? No, sir. No. हाँ, First यस। of all, we use tourniquet. Tourniquet, okay. Where do we use tourniquet in general? Uh, away. सर आयशा वेटिंग रूम में है। तो कैसे करते हैं हम लोग? टॉनिकवेट यूज करेंगे, राइट? अच्छा, चलो अभी टॉनिकवेट यूज किया, कितना जहां पे भी टॉक्सिसिटी किया होगा कितना ऊपर आप टॉनिकवेट लगाएंगे आप? यस, 3 इंच के ऊपर, ठीक है। चलो 3 इंच के ऊपर लगाया आपने, टॉनिकवेट लगा दिया है, ठीक है। चलो 3 इंच के ऊपर लगाया, उसके बाद में डू यू थिंक उसमें क्या होता है? 3 इंच के ऊपर लगाने में क्या होता है? यस, जनरल टॉक, उसके बाद में हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे। यस, गो अहेड। जनरल टॉक क्या होता है? ब्लड फ्लो रुक जाता है सर, पॉइजन ऊपर नहीं जाता ब्लड स्ट्रीम में। अच्छा, पॉइजन ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा नहीं फैल पाता ऊपर के तरफ में, जहां पे भी है उसी एरिया में रह जाता है। तो इंटर्न हमको क्या होगा? हमको टॉक्सिक निकालने में हेल्प होगा। तो अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड, पहले हमको ये समझना चाहिए कि लेट अस अंडरस्टैंड विद सम ऑफ द poisonous snake bite. So I have just made some of the one presentation for you all because this was one of the topic which was most demanding and which I will just share it to you all now. Okay. So first we'll go ahead with the presentation. Okay. Okay. Everyone able to view the screen? Yes, sir. Yes, sir. Everyone able to view? Yes, sir. Right. Fine. Okay. Sir, So one more guys, time. yeah, I'm coming. Okay. सो हम लोग मैनेजमेंट ऑफ पॉइजन थ्रू कपिंग थेरेपीज आज सीखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग जाएंगे, समझेंगे स्नेक के पॉइजन कैसे होते हैं। इज ओके एवरीवन फॉर इंग्लिश, राइट? इंग्लिश एंड हिंदी, राइट? ठीक है। बहुत सारे लोग लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम लोग थोड़ा बहुत हिंदी में बात करें एंड थोड़ा बहुत इंग्लिश, ऑब्वियसली आई विल बी टॉकिंग अलोंग विद दैट, थोड़ा हिंदी भी रहेगा, ओके। तो स्नेक पर इंट्रोडक्शन करते हैं हम लोग स्नेक पॉइजन के ऊपर। पहला पहला क्या है? पहले दे आर 3,500 species of snake but only 220 are venomous। venomous मतलब 250 ही poisonous होते हैं। और इन इंडिया 216 species फाउंड हुए हैं, जहाँ पे बहुत 52 ऑफ देम आर सेट टू बी पॉइजनस। तो इंडिया के स्पीशीज अगर देखेंगे तो 216 स्पीशीज हैं, जहाँ पे 52 ऑफ देम आर पॉइजनस। ओके, अब आ जाइए फैमिली ऑफ स्नेक को समझते हैं। फैमिली स्नेक की फैमिलीज को समझना बहुत जरूरी है। सो वी विल अंडरस्टैंड द स्नेक फैमिलीज, ओके। तो फर्स्ट आकर there are 5 families of the snake। तो पहले आके क्रोटालिडे। क्रोटालिडे क्या होता है? आपने देखा है रैटल स्नेक? देखा है आपने? आप लोगों ने रैटल स्नेक्स देखा है? यस सर, ओके, रिंग्स हम रैटल देखते हैं। स्नेक कॉपर है, जहाँ पे यूजुअली क्या है, एशिया और अमेरिका बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स में यानी रिवर्स में यहाँ पे सारा पाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे आपने स्नेक्स देखा होगा, इसको हम लोग रैटल स्नेक, यानी ये कॉपर हेडेड होते हैं। क्लियर? ये कॉपर हेडेड होते हैं। क्लियर गाइस? तो इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो दूसरे भी हैं। अगर वन मोर पिक्चर आई हैव, ओके, दिस इज आल्सो कॉपर हेडेड, ठीक है। वन मोर वी सी हियर एज वेल, ओके। तो ये सारे के सारे अगर आप स्नेक्स को देखेंगे तो इनका पूरा का पूरा अगर देखेंगे तो दीज आर, ये फैमिली कौन सी है? क्रोटालिडे की फैमिली है। क्लियर एवरीवन? ओके। एंड थोड़ा बहुत अगर आप इसमें और डिटेली समझेंगे, लेट्स गो टू द नेक्स्ट फैमिली विच इज वाइपैरिडे। वाइपैरिडे में क्या होता है? वाइपैरिडे में एक आके रसल वाइपर होता है, गैबून वाइपर होता है, सॉ स्केल वाइपर, ये आके पार्ट्स ऑफ अमेरिका में यूजुअली पाए जाते हैं, ठीक है। अब आ जाइए इनके पिक्चर को समझते हैं हम लोग। फर्स्ट आकर ऐसे होते हैं ये लोग, वाइपैरिडे ऐसे होते हैं, रसल वाइपर जैसे होते हैं, जहाँ पे सामने उनका मुंह एकदम शार्प होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसको भी वाइपैरिडे रसल वाइपर्स होते हैं। दिस इज हाउ इट इज, ओके। उनका
जितना भी सारा चेहरा होता है एकदम विल बी वेरी हुडेड वे. Okay, there is a reason they are called as Russell vipers. Okay, then third family it is Elapidae. Elapidae आकर एक कोबरा काइंड ऑफ स्नेक होता है, जहाँ पे हम लोग टाइगर स्नेक भी कहते हैं, जहाँ पे सारे पार्ट्स ऑफ यूरोप्स में भी पाया जाता है. तो यूजुअली अगर इंडियन कोबरा जहाँ पे आप देखोगे, तो इंडियन कोबरा जितना भी है सारा यू विल सी दिस काइंड ऑफ इंडियन कोबरास. ओके, तो नेक्स्ट आकर हम लोग देखेंगे, ये भी एक तरह का इंडियन कोबरास ही है, जहाँ पे वी सी ऑल दीज यूजुअली दीज आर एलापिडे जहाँ पे है. यूजुअली अगर आप देखोगे तो इंडियन में अक्सर पाया जाता है कौन सा वाला, एलापिडे. ओके, तो बाकी के जितना भी सारे दूसरे फैमिलीज होते हैं बहुत पाए जाते हैं, बहुत रेयरली पाए जाते हैं जहाँ पे घने जंगलों में और ट्राइबल एरियाज में. बट इन जनरल एलापिडे इज यूजुअली फाउंड इन नॉर्मल forest areas. Okay, and let's come down to Hydropidae. Hydropidae happens यहाँ पे, जिसको हम लोग वाटर स्नेक जिसको कहते हैं, करेक्ट. वाटर स्नेक्स कहते हैं ना हम लोग, यानी पानी में स्नेक्स वगैरह कहते हैं, ठीक है. ऑल सी स्नेक्स आर पॉइजनेबल बट दे वोंट बाइट. ओके, तो नाउ कमिंग टू द कैल्यूब्रिडे. कैल्यूब्रिडे ये आके बर्ड स्नेक्स होते हैं. ये बर्ड स्नेक्स होते हैं जहाँ पे ये they fly, they fly, they can jump, they can slang over. तो ये सारा चीज ये होता है जिसको हम लोग कैल्यूब्रिडे कहते हैं हम लोग. ओके, so these are usually found where in the usually in the usually in the very tribal dense forest में पाए जाते हैं. और जहाँ पे भी अगर आप देखेंगे very अफ्रीकन एरियाज में, यहाँ पे जहाँ पे यूजुअली वेरी डेंस रीजन, डेंस फॉरेस्ट जहाँ पे होता है, यहाँ पे अक्सर ये पाए जाते हैं. क्लियर विद दैट गाइस? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट नेक्स्ट वन विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ द स्नेक्स. कोई बता सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्नेक्स क्या क्या हो सकता है? यस, क्लासिफिकेशन ऑफ स्नेक क्या हो सकता है? पॉइजनस और नॉन पॉइजनस. पॉइजनस और नॉन पॉइजनस नॉन स्नेक. पॉइजनस. करेक्ट. ओके, यस करेक्ट. एक आकर पॉइजनस होता है, एक आकर नॉन पॉइजनस होता है. ओके, सो वन let us understand, one it is poisonous snake. मैंने एक क्लासिफिकेशन बनाया हुआ है. तो एक आके पॉइजनस स्नेक, एक आके नॉन पॉइजनस स्नेक. ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट पॉइजनस स्नेक में दो होते हैं, एक आके जैसा कि कोबरा, जैसा कि किंग कोबरा, क्राइट जिसको कहते हैं. वाइपरिडे में ये दोनों वाइपर्स होते हैं जहाँ पे ये पॉइजनस स्नेक में पाया जाता है. अगेन इफ यू विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट अबाउट नॉन पॉइजनस स्नेक. नॉन पॉइजनस स्नेक ये के एक ट्री स्नेक होता है. ट्री स्नेक जहाँ पे फ्रेश वाटर स्नेक होता है, जहाँ पे इसको हम लोग कोरल स्नेक भी कहते हैं. क्लियर विद दैट एवरीवन? सो नाउ उसके बाद में इसको हम लोग और थोड़ा डिटेली समझते हैं, एक आकर पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में. इसके ट्राइट्स मतलब इसके जितने भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसको समझते हैं कि इसको कैसे कैसे हाउ इट हैपेंस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेड स्केल्स. The poisonous snake, what happens? They are small in viper, larger opening or pit is present between eye and nostril. इसको यूजुअली हम लोग पिट वाइपर्स कहते हैं. ठीक है, अगेन इसी के हेड स्केल्स में अगर देखेंगे तो नॉन पॉइजनस स्नेक के हेड स्केल्स बड़े होते हैं, बट अगेन पॉइजनस स्नेक्स के हेड स्केल्स इट विल बी वेरी स्मॉलर बट लार्ज इन ओपनिंग. ओके, दे आईज एंड नॉस्ट्रिल के बीच में pit रहेगा. There will be a pit in between them. But non-poisonous snakes are always large. Okay, these are some of the classification which we need to know. Now coming to the belly scales. Belly scales are large and cover entire breath. ठीक है, पॉइजनस स्नेक्स में क्या होता है, इनके जितनी भी सारी बेली होती है ना, जितना भी सारा बॉडी होता है, ये सारा लार्ज और कवर होता है एंटायर ब्रेथ. ओके, now coming to the non-poisonous में small like those on the back, moderately large but do not cover entire breath. ओके, फैंग्स को समझते हैं. फैंग्स इनका जो भी जो डसते हैं ये लोग. ओके, तो यहाँ पे हॉलो होता है, जैसे कि हाइपोडर्मिक नीडल के जैसे होते हैं. ठीक है,
और यहाँ पे नॉन पॉइजनस के शॉर्ट और सॉलिड होते हैं। नाउ कमिंग टू द टीथ, इनके टीथ को समझते हैं। इनके टू लॉन्ग फैंग्स होते हैं। अगर आपने स्नेक के दो यानी फैंग्स, दांत देखे होंगे, दो लॉन्ग फैंग्स होते हैं। तो यहाँ पे नॉन पॉइजनस के सेवरल रहते हैं बट बहुत स्मॉल टीथ्स होते हैं। कमिंग टू द टेल, टेल क्या है? कंप्रेस्ड होता है, छोटा होता है। ओके, तो कंप्रेस्ड वे से होता है। अगेन नॉन पॉइजनस में नॉट मच कंप्रेस्ड। हैबिट्स यूजुअली नॉक्चुरल होता है, यानी एक 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 जगह पे नहीं होता, अलग अलग वो मूवमेंट करेगा, एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे नॉन पॉइजनस वाले ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। क्लियर? Understanding? Now, let's go according to modern view. The snake poison depends on the following factors. Okay, so the first one is it depends on the nature, location, depth, and the number of bites. Okay, तो ये सारा का सारा चीज अगर हम समझेंगे तो क्या होता है? We have to understand what is the nature of the poison. Okay, तो पहला नेचर ऑफ द पॉइजन कैसे है? नेचर आके ये पॉइजनस पॉइजनस स्नेक ने बाइट किया है या नॉन पॉइजनस स्नेक ने बाइट किया, लोकेशन कहाँ पे है? यूजुअली क्या होता है? एक्सट्रीमिटीज में यूजुअली यू विल सी, एक्सट्रीमिटीज में ही सारे के सारे bites या toxicity, anything whatever is there, it happens majorly in the extremities. And depth, we need to understand what is the depth of the bite it has done. Okay, and also understand the number of bites. Clear? Then 98% of these snake bites occur over the extremities, as I told you. Then the length of the times the snake holds. We also need to understand kitna der tak ye length of the time the snake has holded the particular area, or had bited that particular area, for us to understand its intensity and the depth it would have taken place. Clear? Now coming to the extent of anger or fear that motivates the snake. Okay, ऑल्सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको छेड़खानी करके किया है या ऐसे ही आकर किया है। क्योंकि मेजर ऑफ द एनिमल्स और इंसेक्ट्स, इफ यू विल नो, और रेप्टाइल्स इफ यू नो, all these they all do not harm just like that. All goes how anger it is, how fear it is, fear factor it is, और किसी ने कुछ if anybody would have irritated it, or made discomfort for that a particular reptile or a particular insect. Okay, all these also comes under the perfect factor. Now again, the amount of venom that has been injected. Okay, इंजेक्टर जितना भी सारा आजकल तो एंटीडोट्स हो गए हैं, जितने भी सारे एंटी वीनम के इंजेक्शंस हो गए हैं। And but we will try to understand, apart from the anti-venom injections and antidotes of the anti-venoms, okay, we will also know from the cupping point of view, how can we exactly try to manage it accordingly. Okay, now again the species, again we need to understand which species of the snake has been bitten that particular region. Okay, as we know, with these are the families are there, इसमें से कौन सी family ने bite किया है और कौन सी species ने bite किया है, that also makes a larger impact on that. Again now comes to the condition of its fangs and venom. कंडीशन ऑफ द फैंग्स एंड वीनम ग्लैंड्स। ओके, कंडीशन कैसी है? वहां पे उसने फैंग को छोड़ दिया है या ग्लैंड को छोड़ दिया है, या वहां पे रह गया है, वहां पे जितना भी सारा वीनम वहां पे रह गया है। तो ऑल दैट कंडीशन, एवरीथिंग हैज टू बी एनालाइज्ड प्रॉपरली। ओके, नाउ अगेन कमिंग टू द एज एंड साइज ऑफ द विक्टिम। अगेन जो भी विक्टिम है, विक्टिम मतलब जो भी पेशेंट को जिसको भी ये अफेक्टेड है, उसको अगेन साइज और एज भी देखना बहुत जरूरी होता है। वेदर कंडीशन कैसी है, क्रूशियल है, मॉडरेट है, माइल्ड है। अगेन वी कैन हैंडल इट प्रॉपरली फ्रॉम आवर system, or we also have to escalate it and also include the other system, or take it to the emergency condition or emergency wards to emergency handle it on the emergency purpose. All these things also has to be understood in a proper manner. Okay, then again, victims sensitivity to the venom. Again, all need to understand that har ek ki body depends on different factors and sensitivity. Okay, अब विक्टिम की सेंसिटिविटी कैसी होती है, वो पर्टिकुलर वीनम को उसने कैसे रेस्पॉन्ड किया, एक एक रेस्पॉन्ड इमीडिएटली
हो जाता है, जहाँ पे वो लोग बेहोश हो जाते हैं, या दे विल गेट इनटू irritation, they get into sweating, they get into also many of the factor gets into convulsion. Everything may happen on the later stages also, but again for some people they resist, okay, according to the body type and body constitution, so they also resist and they maintain it and they try to manage it, okay, try to manage it accordingly for a specific period of time. So all depends on the body condition as well, okay. So again, the pathogens in the snake. Again, pathogens कौन से snake में, again poisonous है, non-poisonous है, everything we try to understand. Okay. Again, the first aid and medical care that is been taken. Guys, you need to mute your mic, please. Talat Mubin ji, please mute कीजिए. It disturbing. Please. Okay, the first aid and the medical care that has been taken. Okay, the first aid आपने कौन सा first aid किया है and medical care कैसे किया, all this comes into the factor. Clear everyone? So अब आ जाइए modern first aid पे. Modern first aid पे हम लोग समझते हैं modern first aid इसको कैसे करें हम लोग, and we will also understand how we will manage with the cupping therapy and also with the Ayurvedic point of view. Okay, so let's understand now the modern first aid. पहले अश्योर कीजिए पेशेंट को, थोड़ा firmly press कीजिए जहां पे भी wherever there is a bitten area, okay, slowly firmly press that area which delays the absorption of the venom, okay. Then immediately apply a broad firm bandage around the limb on the bitten area. It should be tight enough to occlude the superficial venous and lymphatic return, but does not, disturb the deep arterial or deep venous flow. इसका ये मतलब होता है जितना भी आप क्या करना पड़ेगा, जहां पे भी लिम्फ में जहां पे भी बिटन किया, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग पे ही बात किया, मिनिमम यूजुअली 4 इंच, यूजुअली 4 इंचेस अबव जहां पे भी बिटन एरिया होता है, वहां पे क्या करेंगे, फर्मली हम लोग बैंडेज करेंगे टाइटली, जहां पे ये वो काफी रहेगा कि सुपरफिशियल वीनस और लिम्फेटिक रिटर्न नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, और जहां पे हेल्प करेगा टॉक्सिसिटी को बाहर निकालने के लिए. The ligature should be loosened only after every 15 to 20 minutes for about 10 seconds. अब जहां पे भी लिगेचर कर रहे हैं, लिगेचर का मतलब जहां पे भी बांध रहे हैं आप लोग, ठीक है, उसको अगेन आप लूजनिंग करेंगे 15 से 20 मिनट का बाद में, फिर एक 10 सेकेंड. क्यों कर रहे हैं हम लोग ये, कोई बता सकता है, कोई बता ब्लड फ्लो सकता के है? लिए, लिगेचर को, इस लिगेचर को हम लोग लूज क्यों कर रहे हैं हम लोग? हाँ, ब्लड पहुंच के हाँ, ब्लड फ्लो होने के लिए, है ना. ओके, है ना. ये डीप वीनस फ्लो होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरी 15 टू 20 मिनट्स में हम लोग क्या करते हैं, 10 सेकेंड्स को ओपन करते हैं, फिर टाइट कर दिया हम लोगों ने, समझ रहे हैं, फिर अगेन 15-20 मिनट्स को टाइट किया, फिर 10 सेकेंड को हम लोग लूज किया. तो ऐसे प्रोसीजर हम लोगों को यूजुअली करना पड़ेगा. मेक अ क्रॉस इंसिशन of 1 centimeter long and 0.5 centimeter deep over each fang mark. समझ में आ रहा है? यहाँ पे जैसे कि मार्क इंसिशन हो गया, जैसे कि वी आर रिलेटिंग दिस टू द कपिंग इंसिशन. ओके, ये जो भी इंसिशन हम लोग करेंगे, ये क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग हम लोग इंसाइज करेंगे एंड डेप्थ को थोड़ा जाएंगे. वी गो लिटिल बिट डीपर बिकॉज वी हैव टू लिटिल पंचर और or remove the toxicity from the deep deep venous area. Okay, and not only targeting superficial venous but also the deep venous, so that इसीलिए हमारा यूजुअली 0.5 सेंटीमीटर थोड़ा डेप्थ जाते हैं, जहां पे भी ईच का, यानी जहां पे भी फैंग के मार्क्स, जहां पे भी ये बाइटेड एरिया, जहां पे फैंग के मार्क्स आपको देखे होंगे, आपने कभी सांप काटा हुआ देखा होगा, वहां पे एक मार्क छोड़ देता है ना, उसी मार्क के ऊपर हम लोग 1 सेंटीमीटर लॉन्ग इंसाइज करते हुए डेप्थ को थोड़ा 0.5 सेंटीमीटर जाएंगे. क्लियर? नाउ आप आ जाइए, सक्शन शुड बी डन फॉर एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर द बाइट. सक्शन जो भी हम लोगों ने किया है, अब सक्शन कौन सा सक्शन आ जाए, यही कपिंग का सक्शन, कुछ मत कीजिए, इसको क्रॉस इंसाइज करें 1 सेंटीमीटर लॉन्ग इंसाइज करने के बाद में डेप्थ इस हिसाब से जाने के बाद में सक्शन कीजिए एटलीस्ट 1 घंटा.
आप बाइट होने के। देखो ये बहुत इजी हो जाता है मैनेजमेंट अगर इस प्रकार आप करोगे तो देयर लॉट ऑफ चांस दैट ये वीनम को बाहर निकाल सकता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ सक्शन, क्योंकि जितना भी सारा ये बाहर निकलेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द ब्लड, ओके, जितना भी सारा ये टॉक्सिस और वीनम जहाँ पे बाहर निकलेगा फ्रॉम द लेवल ऑफ द सुपरफिशियल एंड डीप वेन्स, ओके, ये बाहर निकलते निकलते क्या होगा, there are lot of chances that even the venom also come out accordingly, okay, and then this helps to remove 20% of subcutaneous injected venom। अब आ जाइए, दिस हेल्प्स टू रिमूव 20 इंजेक्टर। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जितना भी सारा वीनम होता है, इसको ऑलमोस्ट मैक्सिमम 20% ये निकालने की हेल्प होता है, ओके, एंड देन द वुंड शुड बी, अब उसके बाद में आ जाइए cauterization। Can anybody tell what is cauterization for some people who don't know? What do you mean by cauterization? Yes, guys, anyone what do अग्नि you mean by? कर्म। Yes, फायर मीन्स अग्नि करना है, वैसे अग्नि कर्म जो आयुर्वेद में। अग्निकर्मा कहते हैं, करेक्ट ना, ओके, फाइन, अग्निकर्मा कहते हैं, बट कैसे करते हैं कॉटराइजेशन? अगेन अग्निकर्मा में हम लोग एक गरम सा एक रॉड को एक गरम करते हैं, शलाका, हाँ है शलाका ना, से कर। शाला का जिसको कहते हैं, गरम करके हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर में जहाँ पे भी वुंड एरिया है उसको कॉटराइज करते हैं ताकि वो पॉइजन को बंद कर दे, सील कर दे विद इन द टिश्यूज, अंडरस्टैंड? तो अब इसके बाद में, so this is how the first aid usually takes place. You understand everyone? Any doubts with this? This is how the usual procedure that takes place over the thing. We will also understand with the help of a diagram now in some time. Clear with this? Clear with सर this? क्रॉस इंसेशन मतलब एक्स एक्स करना है क्या सर, ऐसा क्रॉस क्रॉस? हाँ, क्रॉस इंसिशन करना है, इट शुड नॉट बी, देखो क्रॉस इंसिशन कैसे होगा, हाँ एक्स टाइप ही करेंगे, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका फैंग एरिया है, अब फैंग एरिया में क्या करेंगे, एक एक लॉन्ग इंसिशन करेंगे, ठीक है, फिर अगेन क्रॉस करेंगे, लॉन्ग करे ऑब्लिक करेंगे, दोनों ऑब्लिक वाइज में क्रॉस करेंगे हम लोग, ठीक है, देन ओनली क्या होगा, वो टू एंड फ्रो होते हुए वो क्लियरली बाहर निकलेगा एट द फैंग एरिया। अगर सिर्फ हम लोग लॉन्ग करते हैं, so maybe the venom would have traveled from the subcutaneous to the different part, so we may miss on that, correct? That's the reason we do a cross incision in order to bring the what do you say, injector venom out of the body, clear? अब आ जाइए, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं जनरल ट्रीटमेंट। अब जनरल ट्रीटमेंट हम लोग इसको कैसे करेंगे, ठीक है, हम लोग वो भी समझते हैं, ओके, एंड जस्ट वेट गाइस। Okay, able to hear my voice clear?
Yes, yes, yes. Okay. Perfect. Now, general treatment. Okay. The person now, अब जो भी bitten हुआ है snake से, should immediately bite the snake. ये कहा जाता है आयुर्वेद में, उसकी यानी lump of a stone या तो mud tearing with his teeth violently. The site should be smeared with the ear wax. ठीक है, क्योंकि this is one of the saying in the olden and ancient texts. If the binding is not applicable at such sites, should be excised and then cauterized. Sucking, excision and cauterization are recommended. अगर आपके पास में सक्शन नहीं है, अगर आपके पास में बांधने के लिए कोई लिगेचर नहीं है, तो उस एरिया को क्या किया जाता है? एक्साइज किया जाता है। एक्साइज मतलब वो एरिया के फैंग पे जहां पे भी वीनम के मार्क्स हैं, उस एरिया को एक्साइज करके निकाला जाता है, फिर उसके एरिया में कॉटराइजेशन किया जाता है ताकि वो एरिया को वुंड हीलिंग हो जाए। फिर उसके बाद में देन व्हाट हैपेंस एट द साइट ऑफ द बाइट, सकिंग शुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर फिलिंग द माउथ विद अ क्लॉथ और हरिद्रा। पुराने जमाने में, ओल्डन डेज, इफ यू विल सी, देयर आर स्टिल लॉट ऑफ ट्राइबल पीपल एंड इवन वी हैव बीन सीइंग इट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड डेज। Whenever there is the snake venom has to be removed, what they used to do is they used to suck the particular venom area, okay, from the mouth. Okay, after sucking from the mouth, once they remove it, so that they are not been infected, the person who is sucking is not been infected, what does he do? He used to fill the mouth with the help of haritra, so that there is no particular infection to his body. Okay, and then tourniquet should be tied by the expert. The binding should be soft rope or soft elastic. Okay, soft elastic. Okay, and then the teeth or fangs of the snakes. The teeth or fangs of the snakes, okay, which are not on vital spots, should be pulled out by squeezing the area of bite. Symptoms of toxicity will not develop if the fangs are removed. Okay, so ये देखना है कि वो vital spots पे नहीं है, अगर उसको दिखाई दे रहा है तो हो सके तो उसको निकाल सके तो pull out भी करना जरूरी हो जाता है। Then again cauterization, all the bite should be cauterized, यानी जैसा बताया गया है, ये अग्निशाला का होता है। शालाका से क्या होता है? अग्निकर्मा किया जाता है वो पर्टिकुलर एरिया में। अगर जिसको भी कॉटराइजेशन चलाना आता है मेडिकली भी, वो पर्टिकुलर एरिया में कॉटराइजेशन विद द हेल्प ऑफ कॉटरी से भी कर सकते हैं। ठीक है। देन विनी सेक्शन जिसको हम लोग फसद, वी कॉल इट एज फसद, एंड आयुर्वेदा में सिरा वेदना भी किया जाता है, जहाँ पे when the poison has spread to the distant area, venesection should be done with help, which helps to remove the contaminated blood from the body. Okay, तो ये बहुत helpful करता है। venesection is really very helpful. Then the first treatment, the line of treatment after the suction and the cupping, or even if it is excision, whatever it may be. Okay, so the next plan can be taken it into venesection. Okay, then the horn, olden days the horn method was being used. Okay, and also some places leeches are also being used, okay, to remove the venom from that particular area. Then bloodletting therapy should be done for all the bites. So that's the reason it's, if you will see bloodletting in olden days, what was, if you will understand the olden days, पुराने जमाने में what was the major necessity of primarily users of cupping therapy? The primary uses of cupping therapy in olden days was majorly to what? For what? Yes. Primarily uses of cupping therapy क्या था पहले जमाने में? Primarily uses, okay, primarily uses of cupping in olden days. Snake bite and all. Yeah, snake bites and guys, Insect bite. are you not are you Scorpions. unable to view the screen? Are you guys able to view the screen or no? Yes, Yes, sir. sir. We are able to see the screen. Yes, sir. Yes. Okay, fine. Yeah. So पुराने जमाने में अगर we understand the primarily uses of cupping, पहले क्या होता था, the primarily uses of cupping was basically to, for what?
go to removal of snake bites, removal of toxic bites, removal of pus, removal of carbuncles, removal of any kind of swelling, abscess, fistula. So these were the primarily uses of cupping olden days, much before even when it became a sunnah or hijama. You understand? These were the basic necessity why the cupping was being used in the olden days, much before it became sunnah, even during the Egyptian or even with the Chinese people, or you talk with regards to the usually Egyptians, okay, where they have depicted evidences saying that usually the bloodletting and the cupping as a horn method was usually being used for removing snake bites and scorpion bites those days. Okay, apart from allopathic drugs or antidote, the herbal drugs helpful in poisonous bites are. Can anybody tell what is the best anti poisonous drug in Ayurveda? If any Ayurvedic doctors here, I've given so many things, but again, What's what name, sir? is You yes, which is Pikachu, yes, Pikachu, sir. Kapi Kachu. Okay, Kapi Kachu. But majorly used. What is the common drug which is used for antidote or any kind of poisons affected in our body? That is Sir, series. regular तक Sirisa. Sirisa, okay. Sirisa is a major drug which has been used in management of all the poisonous in our body, affecting you with regards to any kind of animal, taking it from the animal or from the plant origin, or plant poison bhi ho jaye ya nahi to animal poison ho jaye. So Sirisa is the one of the drug, but again ये सारा एक herbal drug formulation hai. This is a herbal drug formulation which we call seeds of Vamsha, Katuka, Patali, Nagra, okay, seeds of Shirishan, Goveduka, and Vacha. So again, we'll go into little much more deeper later, and that has to be given for drinking. Clear? Then again, 5 parts of Shirisa. Shirisa, that is called Pancha Shirisha, helps in destroying the poisons. Clear? Now, let's go with the scorpion bite. These are very one page. We'll understand and then go with the point system. Okay. Again, how the scorpion bites happens. Clear with the snake bites. Everyone, clear with the snake bites. Everyone. Yes, sir. Okay. yes, sir. गुरुवार तक चलेगा मंगलवार तक ही चलेगा ऐसा बुधवार ऐसे ही है So I'm going guys 1 minute.
Okay. Right. Okay, fine. Scorpion are born from the putrefied dung, ठीक है, or cadaver of animal, or killed by the poisoned arrow, or also from the cadaver of the snakes, ठीक है. So now signs and symptoms हम लोग समझते हैं. एक आके क्या क्या हो सकता है? Burning sensation हो सकता है, severe pain हो सकता है, blue discoloration हो सकता है, and bursting pain at the site, fever, rigidity of the body, black colored blood comes out of the orifice, sweating and fainting, and death occurs. Okay, so now अब आ जाइए rat bites पे आते हैं. The site of the bite by the rat, ठीक है, ये समझ में आ गया स्कॉर्पियन बाइट का. Very short I'm taking with the all the bites, so but major concentration was for the snake bites. Okay, so again the site of the bite by the rat should be burnt either by a stem of a plant. If not done, then there will be a severe apparent development of round muscular growth हो सकता है. Then the after burning the wound will be incised with the blade. तो यहाँ पे भी हम लोग जितने भी सारे bites होते हैं याद रखें. First and foremost major thing has to be done is what suction with the incision. अगर अगर वहां पे फैंग्स हैं, स्नेक के फैंग्स जैसे होते हैं या स्कॉर्पियन के होते हैं, तो ऑलवेज गो विद द क्रॉस इंसिशन, जहां पे 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए एंड 0.5 सेंटीमीटर डेप्थ होना चाहिए. एंड यहाँ पे जितना हो सके आप लोग सक्शन करके थोड़ा देर लूज करेंगे हर 15 मिनट में, ताकि सर्कुलेशन हो सके वहां पे एंड वीनम बाहर निकल सके. तो ये आगे snake or scorpion पे होता है. But again now if you understand with regard to the rat bite, always best thing is first you go ahead with doing with the suction effect with the help of the cup, and then vener, Vinny puncture or Vinny section with the help of the Vinny section, that is called Sira Vedana. So or Fasad, and Yunani also helps in with regards to the rat bites also. Then coming to the honeybees में क्या होता है? Swelling होता है, burning sensation होता है, eruption of pustules. These are majorly things which we see. Okay. Now coming to the medicine for all kind of poison, this just I have given you as a general understanding के लिए. एक आके वचा होता है, देन अगेन हिंग होता है, विडंगा होता है. तो ये सारे के सारे चीजें आप लोगों के नॉलेज के लिए बताया गया है. इसका टिकॉक्शन बनाना पड़ेगा विच वी कॉल वचा, हिंगू, विडंगा. ओके, देन अगेन साइन दवा जिसको रॉक्सॉल, गजा पिपली, पता, व्योशा. ठीक है, ये सारे चीजों का अगर आप लोग टिकॉक्शन बनाकर पिलाते हैं तो इसमें भी बहुत सारा हेल्पफुल होता है, बिकॉज ऑल दीज आर एंटी venom drugs. Okay, and also along with this इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग शिरीषा पंचा शिरीषा is always good. Pancha shirisha is always one of the most used anti-poisonous drug in major of the anti-venom cases. Clear with this? So here we uh, stop the presentation. Now we go with the point system. Any doubts with this? Can anybody tell me any doubts with this? No, sir. Clear hai na? Okay, now I'll be taking you with the slide. Just wait. Sir, once again explain about the incision, cross incision. देखिए क्रॉस इंसिशन, एक सेकंड में I will take you with the diagram and I'll show you there. Okay, 1 minute. Vai la pure vai di venti a grattino. A te orche no? डॉग बाइट के लिए नहीं, क्योंकि दोज आर लिटिल रेबीज उस पे होता है, तो लेट्स नॉट टेक मच
क्योंकि यहाँ पे प्रूवन यू नो रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, कहाँ पे, स्नेक बाइट्स पे, स्कॉर्पियन बाइट्स पे, एंड सम ऑफ दी हनी बीज पे, रैट बाइट्स पे, या माइस पे, ओके। बट अगेन फॉर डॉग बाइट्स लेट्स नॉट टेक, बिकॉज वहाँ पे lot of chances are for rabies, so always better to not to take it. That needs an emergency condition, okay? So now see here, we will do it in this way, ठीक है? तो पहले हम लोग स्नेक बाइट्स और पॉइजनस बाइट्स करते हैं, क्लियर? अब आ जाइए, स्नेक बाइट्स और पॉइजनस बाइट्स करते हैं। बिफोर दैट फर्स्ट वी नीड टू नो डायग्नोसिस क्या हो सकता है यहाँ पे। पहले डायग्नोसिस करते हैं, कुछ पॉइंट्स करते हैं, उसके बाद में जहाँ पे भी किया होगा वहां पे भी करते हैं। यस, गो अहेड। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? यस, डायग्नोसिस क्या होगा गाइस? यस, इंक्रीज रेट होगा, राइट? Increased state is स्ट्रेट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? हम लोग क्या करेंगे? ड्रेनेज ड्रेनेज yeah, to टेक्निक करेंगे। drainage. Yeah, drainage method. ड्रेनेज टेक्निक करेंगे, करेक्ट? एवरीवन गेटिंग इट? ओके। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट तो यहाँ पे क्या करेंगे? स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप में क्या करेंगे? अफेक्टेड एरिया लिखेंगे, इसलिए अफेक्टेड एरिया इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि we do not know either it may be 1 point or 2 point or 3 point also depending on the area of the venom, ठीक है? So we are not at all going ahead and putting how many number of point or it where we can write in this way, either it can be 1 or 2 point treatment system, okay? नेक्स्ट नेक्स्ट इसके बाद में क्या हो सकता है? सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप क्या होगा? यस, गो अहेड। सेकेंड स्टेप क्या होगा? Second is the point. सेकेंड स्टेप क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? ग्लांस पे करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे लाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा? स्टेप 3 में क्या लाएंगे हम लोग? स्टेप 3 में क्या लाएंगे हम लोग? यस, स्टेप 3 में क्या लाएंगे? लीवर लाएंगे हम लोग, Liver. Yes. लीवर लाएंगे। दूसरा क्या लाएंगे हम लोग? ब्रेन लाएंगे, हार्ट लाएंगे, स्प्लीन लाएंगे, ठीक है? हो सके तो जितने भी सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उन पे भी करने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हमारा वाइटल ऑर्गन्स को बचाने की जरूरत होती है। ओके, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे, ठीक है? अब जो भी एरिया किया हो, जो भी एक्सट्रीमिटी किया, फॉर एग्जांपल टेक अ केस दैट यहाँ पे स्पेशली किया गया होगा इन दी लेग, ओके। अब अब हम लोग समझते हैं कि राइट लेग पे किया गया होगा, ठीक है? राइट लेग का हम लोगों को ये देखना है कि राइट लेग पे कहाँ पे स्टेप हम लोग ले सकते हैं। स्टेप फॉर राइट लेग का, राइट या लेग का कहाँ पे होगा? फॉर एग्जांपल काफ मसल के आसपास में ले लें। तो काफ मसल के आसपास में लेते हैं तो कौन सा एरिया होगा? कौन सा वर्टिब्रे या कौन सा नर्व सप्लाई होगा? बता सकते हैं? कैन एनीबॉडी टेल व्हिच विल बी द नर्व सप्लाई ओवर हियर? L, which one? L5. L5. Okay, L4, L5 can be taken. Okay, clear? Then coming to the Sunna point. So let's go ahead with the Sunna point. What should be the Sunna point over here? Yes. Zaharul Khadam and Kokh Rukba. Yeah. 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 Should be one, and then Zahrul Qadam. Okay, Zahrul Qadam can be one, and then also can be taken as Suriniya push or Al-Wariqain. Or okay. Kokh Rukba. Urania. Rukba, okay, nearest right, can be also taken. Okay, this also can be taken. Clear with this? And इसके बाद में हम सर लोग काहिल ले सकते हैं? काहिल भी ले सकते हैं, not wrong also, can be taken. See, सुन्ना point goes on your intention, you can take दो ले सकते हैं। नियरेस्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी के जितने भी सारे हैं it goes on your treatment pattern, ठीक है?
Okay, now coming to the treatment here. So let's go and apply the point here. Yes, go ahead. Tell me, guys. तो फर्स्ट ट्रीटमेंट कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग? हाँ, ओके, गो अहेड. कहाँ पे करेंगे हम लोग फर्स्ट वाला? कहाँ पे करेंगे पहला वाला? अब आ जाइए, नीचे पे ही ले रहा हूँ मैं. अब समझिए कि यहाँ Sahara पे Al-Qadam. आप Sahara एग्जाम्पल, Al-Qadam. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज द एरिया. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज द एरिया. ठीक है, अब ये एरिया रख के चलें. ठीक है, अब ये एरिया रख के चलें. ये एरिया में हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, अब ये एरिया में पहले क्या करेंगे हम लोग? टॉनिक वेट कहाँ पे डालेंगे हम लोग? इसके ऊपर में टॉनिक वेट करेंगे, राइट? दिस एरिया विल बी टॉनिक वेट. यू अंडरस्टैंड? ओके, guys, you need to mute your mic. ये एरिया में टॉनिक वेट होगा, दिस एरिया में कप होगा. ओके, नाउ अंडरस्टैंड द, गाइस यू नीड टू म्यूट. ओके, लीव. Some people are really, I think 1 minute, guys. So let me take with the help of a diagram. So let me take like this itself. Able to view my screen, right? दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये एरिया में रख के चले हैं हम लोग. Okay, so what we do, guys, one by one, I am just removing it so that हमारी point थोड़ा आसानी हो जाए. अच्छा, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ. ठीक है, ओके, डन. तो यहाँ पे हम लोगों का हो गया. कौन सा वाला हो गया? ये आके स्नेक बाइट का हो गया, करेक्ट. अब स्नेक बाइट के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि सर So the स्क्रीन picture पे stuck, अभी जो sir. टॉर्निकेट You're बना not है ना able वही to. दिखा रहा है, उसके बाद में कुछ नहीं दिखा रहा सर. क्या अगर बोले? चेंज हुआ, सर टॉर्निकेट बनने के बारे में दिखाया ना, वही दिखा रहा है अभी भी. Only that picture is seen, sir. After that, nothing is seen. Okay, is that so? Maybe, okay. अच्छा, ठीक है. स्क्रीन नहीं बदला. स्क्रीन नहीं बदला, मे बी. हाँ,
सही बोले। कभी कभार क्या होता है ना, स्क्रीन नहीं बदला। अभी ठीक है, दिखाई दे रहा है? Yes, yes, sir. अभी दिखाई दे Yes, sir. हाँ दिखाई दे रहा Yes, sir. Yes, sir. रहा है? ये एक्चुअली लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था फ्रोजन शोल्डर का, उसी का है, बट अगेन ठीक है, तो हम लोग इस पे ही काम करते हैं। तो ठीक है, तो ये वाला हो गया। कौन सा वाला? दिस वन, द क्या बोलते हैं, द स्नेक बाइट एरिया। ओके, तो अब हम लोग आते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप वो तो हो गया। सेकेंड स्टेप पिट्यूटरी पे तो लगा ही दिया है हम लोगों ने, इसको हटा दीजिए आप लोग। पिट्यूटरी हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप हो गया, तो थर्ड स्टेप ऑलरेडी यहाँ पे है, लिवर पे है, एंड देन विल गो विद द स्प्लीन। स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन हो गया यहाँ पे। ओके, देन लेट्स गो विद द हार्ट। ओके, ठीक है, एंड देन कौन सा वाला था? किडनी था ना? किडनी आके यहाँ पे हो गया एक, दूसरा आके यहाँ। ओके, देन नेक्स्ट कौन सा था? L5, राइट? हाँ, L5 तो क्या कहते हैं? L4, then L, और एक 5 minutes we are done with the session. Okay, L4, L5, ठीक है, and then next is या फूक। ओके, किसी ने, हाँ, क्रॉस इन्फेक्शन हम लोग करेंगे। ओके, बताता हूँ क्रॉस इन्फेक्शन कैसे क्या है। या फूक, अल्वारिकेन, ठीक है, अल्वारिकेन हो गया। Then we have is focal rukba, right? Okay, focal rukba here. Here. Done, ठीक है, focal rukba हो गया। Then so again next is, इसको बाहर करते हैं, इतना सारा पॉइंट हमारा हो ही जाएगा। ओके, नाउ अब आ जाइए, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, तो General Khatam, sir. कैन टेकन, अगर आपको लगता है कि जरूर कदम लेना है तो जरूर चाहिए तो ले सकते हैं आप। ठीक 16 कप्स हो गए। है, बट ये सारा चीज कैसे करोगे आप? टॉनिक वेट लगा के करो। कहाँ पे टॉनिक वेट करेंगे हम लोग? बाइट के 3 इंच ऊपर। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर, ये एरिया में टॉनिक वेट लगाएंगे। ठीक है, मार्किंग देखा है वहां पे? दिखाई दे रहा मार्किंग Yes, जो sir. मैंने अभी किया? वो एरिया में क्या करोगे आप? वो एरिया में आप लोग टॉनिक वेट लगाकर आप लोग कपिंग करोगे। समझ में आ रहा है? ऑल दीज पॉइंट्स शुड बी योर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर व्हाट? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑन एक बाइट। all the bites, all the bites, okay, सारे ऑल bites, जितने भी सारे टॉक्सिसिटी bites हैं, सारे चीजों को हम लोग बिल्कुल जाकर do this, okay. Now meanwhile लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या करना है हमको। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, पहला हम लोग क्या करेंगे? पहला क्या करेंगे? एज अ कंक्लूजन एंड रिवीजन करते हैं हम लोग। पहला क्या करेंगे हम लोग? यस, टॉनिक वेट। टॉनिक वेट करेंगे कहाँ पे? एक्सपेक्टेड एरिया के ऊपर, फंक्स के ऊपर। सेकेंड क्या करेंगे हम लोग?
सेकेंड क्या करेंगे हम लोग? यस, उसके बाद में सक्शन देंगे एंड क्रॉस क्रॉस इंसिशन करेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, थर्ड क्या करेंगे हम लोग? So Third, yeah, liver, brain, heart. okay, all these, okay, cross incision, and then we do cupping therapy, right? Suction is nothing but that's what cupping therapy we do. Cupping therapy on respective areas. Yes. Okay, then what do we do? Then also, if you think that it is not maintaining, then go ahead and do mini section. Give anti venom, एंटी वीनम का आप ये देंगे, क्या बोले, टिकॉक्शन देंगे, ठीक है? ओके, एंड यू मेंटेन विद द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड से मेंटेन करो उसको, ठीक है? एंड देन व्हाट यू विल डू एट द लास्ट, वुंड मैनेजमेंट को कैसे करोगे आप? वुंड मैनेजमेंट को कॉटराइजेशन से करोगे। गॉट इट एवरीवन? ओके, वुंड Yes, sir. मैनेजमेंट को कैसे करोगे? ओके, कॉटराइजेशन से करोगे। एंड देन फाइनली हाउ विल यू डू इट? एंड इवन इफ इट इज नॉट हैपनिंग विद दिस, देन टेक विद द इमरजेंसी एंटीडोट ऑफ वीनम। स्पेसिफिक होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा स्नेक ने काटा है वगैरह, ये सारा एनालाइजेशन होकर एंटीडोट ऑफ वीनम फ्रॉम द मॉडर्न साइंस। ओके, ये मॉडर्न के हिसाब से, ठीक है? अगर हमारे हिसाब से देखोगे तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये 6 चीजें करोगे, एंड अलोंग विद दैट इफ व्हेन यू थिंक दैट यस ऑफ कोर्स जहाँ पे हॉरिपिलेशन वगैरह ऐसे कुछ हो रहा है पेशेंट का, तो ऑब्वियसली यू विल गो अहेड एंड डू द 7th दैट इज एंटीडोट, ठीक है ना? अंडरस्टैंडिंग Yes, एवरीवन? sir. क्लियर विद Sir, दिस? वो cross incision, sir. हाँ, क्रॉस इंसिशन, ओके ओके। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। क्रॉस इंसिशन, last I will tell you all how to do. It will be somewhere around, अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे है तो हम लोग क्या करेंगे? सॉरी, Sir, वो screen थोड़ा zoom in कर सकते हैं? ठीक है। Wait, I'm just trying to do that, give me 1 minute. It is not happening, it's stucking, एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, I'll take you with the this one itself. Wait, क्रॉस इंसिशन कैसे करते हैं मैं आपको दूसरे इसमें बताता हूँ। ओके, इसी में ही बताता हूँ मैं आपको, रुक जाइए। सर, वो क्रॉस इंसिशन के साथ साथ वो स्नेक बाइट के कितने और पहले या मतलब कि कितने और बात करना है या कितने और बिटवीन करना है? बात तो करना ही नहीं ना, जब भी आप देखोगे तो इमीडिएटली ही करोगे ना, बात नहीं करोगे आप, ठीक है? मतलब इतने इतने घंटे के से पहले या इतने घंटे के बीच में करना है, वैसा कुछ है? नहीं, जैसे भी आप फॉर एग्जांपल स्नेक बाइट होने के बाद में पेशेंट आपके पास में तो इमीडिएटली नहीं आएगा, वो अपना ट्राई टू मैनेजमेंट तो बिल्कुल करेगा, ठीक है? वो जब भी अपना मैनेजमेंट करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली यू हैव टू टेक, क्योंकि जैसा भी पॉइजनस स्नेक बाइट्स होते हैं, ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वीनम विद इन 2 आवर्स हमारे ट्रीटमेंट में, तभी जाके सक्शन से बाहर निकल पाएगा। अगर वो ब्लड स्ट्रीम में अगर वो बांधेगा नहीं, कहाँ पे, अगर जहाँ पे भी बाइटेड एरिया पे अगर उसके ऊपर में बांधेगा नहीं, तो क्या हुआ होगा, ये सारा का सारा वीनम, all that venom would have spread into the bloodstream and would have affected the whole body. So in that cases, it will be little, chronic stage and little challenging to manage these kind of things. But again,
जहाँ पे भी आपका यूजुअली टाइम टेकन इज आफ्टर दी बिटन थिंग, यूजुअली विद इन 1 आवर अगर आपके पास में आते हैं तो यू नीड 1 आवर टू अगेन हैंडल दिस सिचुएशन. Usually always better is point is again depend on how poisonous is the snake bite. Again king cobra का है या इंडियन है, देन अगेन या इट इज दूसरी फैमिली का है. ओके, ऑल दीज या वाइपर का है. सो ऑल दीज आर एक्चुअली नीड टू बी नोन. ठीक है, देन ओनली इट विल बी वेरी इजी. बट अगेन सम ऑफ द पीपल विल आल्सो नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट काइंड ऑफ बाइट इट इज, या ये स्नेक बाइट ही हुआ है, कौन सा स्नेक है नहीं पता होता. बट अगेन विद रिगार्ड्स टू द फैंग्स, फैंग्स के हिसाब से as a therapist you should be knowing कौन सी bite की हुई है and accordingly you have to manage. But usually 1 hour, within 1 hour is the time where you need to manage with our treatment. Then only it is really giving good result and successful treatment in trying to draining out of the venom. But again, if you're trying to manage that treatment after 3 hours, 4 hours and taking risk, don't do that. That time antidotes are required. Antidotes के साथ साथ आप करो तब अच्छा रिजल्ट आएगा. समझ रहे आ रहा है? ओनली डूइंग इट विद रिगार्ड्स टू सक्शन इफेक्ट, ये सारा चीज ओनली दिस विल बी ओनली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. देन यू आर रिस्किंग द बॉडी. डू नॉट रिस्क द बॉडी इन सच अ वे दैट सिर्फ यही करके आप निकाल सकते हैं 2 घंटे के बाद, ये मत सोचिए. सो ऑलवेज इट हैज टू बी वन ऑफ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बट नॉट ओनली द ट्रीटमेंट. So when you see the chronicity of the patient and decide the treatment accordingly. Clear everyone? Yes, sir. अच्छा, मैं यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि एग्जाम्पल अगर ये एरिया है बिटन है. हाँ बोलिए. सर सर जो सरपा करके बोलते हैं सर. एक सेकंड में ये एरिया बिटन है तो इसको ऐसे क्रॉस इंसिशन करेंगे. समझ में आ रहा है? इसको क्रॉस सर एक्स के जैसा ना, एक्स जैसा. हाँ, एक्स के जैसा बिल्कुल. ठीक है, क्लियर? यस, हाँ बोलिए मैम. सर एक पेशेंट है सर, वो सरपा करके बोलते हैं सर, नागरू सरपा करके. सर का मतलब? सरपा मतलब हाँ, पेशेंट है सर. सरपा मतलब स्नेक होता है. हाँ बिल्कुल. हाँ जी सर, वो एक पेशेंट रहते सर मेरे पास. वो फुल बॉडी में वो सब ट्रीटमेंट लेके होने के बाद फुल बॉडी में सब पिंपल्स था और फेस पे भी था सर. मैंने 3 सेशन लिया था, 15 बैग से. माशाल्लाह उसको 100% सेम यही पेंट्स मैंने लगाया था. ये आपको को एक नहीं किया था. और उसके बाद जो भी पेंट्स है ना वो पूरा मैंने कवर किया था. माशाल्लाह 100% रिजल्ट था. ओ वंडरफुल. यानी आपने क्या किया था, एक तरफ का बाइट आप ऑलरेडी निकाल दिए थे या पहले ही निकाले हुए थे या नहीं निकाले हुए थे? सर वो सरपा मतलब वो दूसरी जगह से ट्रीटमेंट करने को आने के बाद सर वो जख्म जो कच्चा था ना वो सूख गया था. वुंड जो भी कच्चा था उसको आपने हीलिंग करने में हेल्प किया. बट उसके बाद जो है ना पेशेंट के पूरे जिस्म में फेस को सब बहुत से ज्यादा पिंपल्स हो गए थे. पिंपल सेंसिटिविटी हो गया होगा या एंटी वीनम ड्रग होता है ना, उसकी वजह से एलर्जी हो गई होगी उसकी बॉडी. बाद वो एलोपैथी मेडिसिन सब लेके माशाल्लाह बहुत जगह देखे वो कम नहीं हुआ था. मेरे पास 3 सेशन है माशाल्लाह, उसको 3 सेशन में 100% रिजल्ट है. बहुत बढ़िया. वेरी नाइस, वेरी गुड टू हियर दैट. हाँ, वेरी गुड. बाकी एनीवन कैन शेयर. और दूसरे किसी ने ऐसे केसेस पे आए हुए हैं या कोई शेयर कर सकता है? जनरल टॉक फॉर अनदर 5 minutes. माशाल्लाह, वेरी गुड तलत जी, वेरी नाइस. Yes, anyone would like to share about the any way you would have handled this kind of situation? Yes, किसी ने हैंडल किया है? नहीं? ओके. सर कैट अगर अपन को बाइट कर लेती है तो उस पे पॉसिबल है ये सब करना? एनी पॉइजनस करने. बट अगेन देखो ये समझना चाहिए कि सर्पा हुन्नू. अच्छा, सर्पा हुन्नू था या क्या था मैडम तलत जी? जी सर. सर्पा हुन्नू था क्या? सर वो नहीं बता सर, मतलब वो गैर मुस्लिम थे. और सर कोबरा सरपा बताए सर. आपका नाम पेशेंट का आकाश सर.
24 ईयर्स का लड़का था। हम्म। वो मेरे पास पेशेंट, मेरे पास उसका टेस्टमोनी भी है, ऐसा एक वीडियो भी अच्छा अच्छा, लेके हूँ ठीक है उसका। ठीक है, वो देखते हैं, क्योंकि क्या है ना, सर सर्पा मतलब कोबरा। हाँ नहीं, सर सर्पा मतलब स्नेक कोबरा ही कहते हैं, बट अगेन ना, अगेन इसमें एक स्किन डिजीज भी होता है, देखना पड़ता है हाँ अगेन हाँ कौन सी लैंग्वेज में वो है करके, है ना, वेदर सर, इट स्किन वाज डिसीज है, कि स्किन पूरी डिसीज बॉडी है। में बोल रहे हैं तो ये स्किन डिजीज हुआ है, तो इसको हर्पीस भी कहते हैं, जैसे कि डॉक्टर करीम ने मैसेज किया है, ऑब्वियसली इट मे बी अ हर्पीस आल्सो, ठीक है ना, तो वो यस। डिपेंड हो सकता है कि ये वायरल भी हुआ होगा, ठीक है ना, तो हर्पीस एक वायरल वायरल डिजीज होता है, तो again, तो देखना पड़ता है, ठीक है ना, अगेन वी कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन कि ये स्नेक बाइट की वजह से ही हुआ होगा, करती है सारा चीज, अगेन विल कम टू नो अबाउट दैट, यस, ओके, बाकी सब लोग, बाकी, यस गाइस, एनी अदर, एनी सर अदर, सर्पसुत्तू भी सेम है क्या? सर्पसुत्तू जिसे बोलते हैं। सर्पा सुत्तू, आई थिंक दैट इज सर्पा सुत्तू इज इट हर्पीस, सर्पा सुत्तू, आई डोंट नो कौन सी लैंग्वेज में है सर्पा सुत्तू, कन्नड़ में है सर, कन्नड़ कन्नड़ा में। में इट इज हर्पीस ओनली, यस इट इज हर्पीस, हर्पीस ही है, हर्पीस एक स्किन इन्फेक्शन होता है, जो एक हर्पीस जोस्टर कहते हैं हम लोग, उसके दो वैरायटी होते हैं, हर्पीस जोस्टर, हर्पीस सिम्प्लेक्स होता है, ये एक वायरस होती है जिसको हम लोग वेरिसोला जोस्टर वायरस कहते हैं, इस वजह से। सर वो जो है ना सर्पा, मतलब जो है ना सर, वो 2 पेशेंट के थे, बहुत सारी जगह मेडिसिन लेके सब आने के बाद भी फिर वो एक खुद की जगह को मिट्टी लगाने से हम लोग को कम हुआ करके आती, मगर वो जख्म सब कच्चा नहीं रहता, वो वहां वो पर वो जख्म को लगाने इस से पे कम हो कंपेयर जाता है। मत करो, नहीं, वो आके हर्पीस है वो, बराबर, हाँ आप जो हाँ बता रहे हो वो स्किन डिसऑर्डर है, इट इज नॉट इट्स नॉट अ स्नेक बाइट और समथिंग, हाँ सर्पा हाँ स्नेक सर। बाइट अलग होता है, और आप जो बताया सर्पा सुत्तू और वगैरह जो भी आज बता रहे हैं, स्किन वो क्या, डिसीज। वो स्किन डिजीज है, वो दैट इज कॉल्ड हर्पीस जोस्टर, हाँ जी सर। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, ओके, माशाल्लाह इसको से उसको हिजामा से रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट आया ऑब्वियसली उसका। अच्छा आता है, दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, अच्छा काम करता है, हाँ जी। ठीक है ना, हाँ, दूसरा और कुछ, एनीवन एल्स, okay, fine. It was fine, guys. Thank you. It was a nice session. I hope it was informative for you all, and hope to see, hope to see you next week. And one more thing, everyone, I would tell that कि कितने सारे लोग आए हैं and have joined here. Everyone, I will. I don't know. My video is not seen. Maybe some issue with the laptop or network. I don't know. But however, my video is on. Fine. One thing we need to know that see here on 31st of August. Okay, I cordially invite all of you all for the annual function of ICA. Okay, ICA is conducting an annual function on 31st of August where all the old students, new students, sare log are invited in Bangalore. I will be sending you all the invitation. I think already we have sent the invitation, and I wish everyone come because we are working for some cause. There is some job drive happening, there are some speakers and there are some of the new things which innovation happening, so I appreciate all the people and the old students, please come down and accept the invitation for the annual function of ICA, which is happening on 31st of August in Bangalore, and the invitation is already sent. Another time our team will keep sending your for your reminders, inshallah. So meet you all also there. We are working for some cause now, and we are working with very closely with ministry with some projects coming up. We wanted to discuss on that as well. So let's hope for the best, and let's see. We'll try to bring changes in. Ayush will try to bring changes in cupping and also the other, the skilling courses in India. Whatever is happening, we're just trying to bring some changes. We wanted to discuss and give you some updates so everybody are in the loop, because many of the people kya hota hai, people are there, don't know about many of the developments initiative that has been happening into the skilling system. So I appreciate everyone join that, and please be a part of it. It's just 2 to 3 hours. Timing has already been mentioned, and to see all, hope to see all there, and I'll be happy if you all be there.
That is all. Okay, and some new development happening for all students also. So be a part of the annual function. Okay. Okay, Yes, guys, sir, thank you very inshallah. much. So next week we'll come up with some new topic, inshallah. And I hope all of you all would have taken this, and it was very interesting topic, and it is, and also little crucial treatment. Okay, it has to be done very sensitively. It's not like how you do the other treatments or for other disease. This has to be taken with the expertise. However, whatever we have known, and from the different understandings, we have given this understanding and knowledge to all of you all. Thank you very much, and thank you. Let's meet up next week. Thank you everyone for joining. I feel Thank you, very sir. happy. I feel very happy. All people, Allah Hafiz, Allah yeah, all of them together again. I feel very happy. All of you all. Every weekly we see the names at least. I feel very happy with all of you all joining. Thank you guys for Thank joining. you so much, sir. Thank you so much, sir. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi Walaikum Thank you. salam. Thank you, sir, inshallah. Jazakumullah khairan jaza. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. तो ये ख्याल से हो item कर मैं भी बहुत अच्छे मेरे मतलब भी बात नहीं अच्छे Wait uncle. Hey, Kojaji.